1. Saharan. सहराई सहराए आज़म से मुतालिक Meaning, relating to the part of the continent of Africa that is south of the Sahara Desert. 2. Infancy. बचपन फ़ितल शेर खारगी खुल्द साली तफूलियत नाबालिग ग़िज़ात Meaning, infancy refers to the early stage of life, typically referring to the period from birth to around 2 years of age. It is a time of rapid growth and development in a child's life. 3. Malnourished. खाने की कमी या सही किस्म के खाने की कमी की वजह से खराब सेहत में कमज़ोर कम दर्जे खुराक पाने वाला नाकाफ़ी खुराक पाने वाला कम खुराकी का शिकार 100 बदपरवरदा Meaning, malnourished is an adjective that describes a person or organism who is suffering from a lack of proper nutrition or inadequate intake of essential nutrients. 4. Stunted. रुका गैर कामिल नमू वाला एकोटा इटिट्रा मामूल के साइज में बढ़ने या तरक्की करने से रोक दिया गया Meaning, prevented from growing or developing properly due to malnutrition or other factors. 5. Infographic. बसरी मालूमात डेटा की बसरी नुमाइंदगी जैसे चार्ट डायग्राम के तौर पर Meaning, a picture or diagram or a group of pictures or diagrams showing or explaining information. 6. Desensitized. कम हसास गैर हसास न होना वो जुल्म के मनाजिर में सदमा या तकलीफ महसूस करने का इम्कान कम है Meaning, desensitized refers to a state of reduced sensitivity or responsiveness to something, often due to repeated exposure or familiarity. It can involve a diminished emotional or physical response to stimuli that would typically provoke a strong reaction. 7. Curb. रोकना है संभालना काबू करना दहाना लगाना है लगाम खींचना कैद पाबंदी रुक Meaning, to restrain or control something, to limit or suppress something. 8. Accord. समझौता मुआहिदा इत्तफाक राय तालमील बाहमी रजामंदी हम आहंग होना मुत्तफिक होना 1. An agreement or a treaty between two or more parties. 2. Harmonious agreement or conformity. 3. To give or grant something, usually as a favor or recognition. 4. To be in agreement or to harmonize. 9. Radically. यकसर बिल्कुल असलना कतन बुनियादी तौर पर इनकलाबी तौर से असासी तौर पर के शदीद तौर पर इंतहा पसंदाना अंदाज से एक ऐसे तरीके से जो किसी चीज के सबसे बुनियादी और अहम हिस्सों से मुताल्लिक है मुकम्मल और तफसीली अंदाज में एक ऐसे तरीके से जो नया मुख्तलिफ और बहुत अच्छा असर होने का इम्कान है Meaning, radically refers to something done or occurring in a drastic, extreme, or fundamental manner, often involving significant changes or a departure from the norm. 10. Viability. ज़ीस्त पजीरी नमू पजीरी हुत नतीजा खेजी काबिलियत हयात होतीत उपज की कुव्वत Meaning, viability refers to the ability of something to survive, prosper, or be successful under given conditions or circumstances. It can refer to the capacity of an organism, a project, a business, or an idea to sustain itself and achieve desired outcomes. 11. Malnourishment. नाकाफी ग़िज़ाइयत की कमी Meaning, the fact of being weak and in bad health because of having too little food or too little of the types of food necessary for good health. 12. Malnutrition. नाकिस खुराक गलत खुराक नाकिस ग़िज़ा नाकाफ़ी खुराक नाकाफ़ी ग़िज़ा कमी ग़िज़ा Meaning, malnutrition refers to a condition resulting from an insufficient or imbalanced intake of nutrients, leading to health problems and deficiencies in the body. It can occur due to a lack of essential nutrients, vitamins, and minerals, or an overconsumption of unhealthy foods. 13. Diplomatic. सिफारती सियासतकाराना किसी भी तरह के मुज़ाकरात से मुताल्लिक सिफारत से मुताल्लिक Meaning, relating to diplomacy or the conduct of international relations.
14. Starkly. अकड़ाहट लिए हुए. Meaning, starkly means in a clear, sharp, and distinct manner, often highlighting a significant contrast or difference. 15. Comparator. तकाबुल पैमा. लोनी तकाबुल पैमा. बिल्कुल सही लंबाई की पैमाइश का आला. एक तंजीम, सरगर्मी, वगैरह जो किसी और उसी तरह की तंजीम या सरगर्मी की कारकर्दगी को जांचने के लिए इस्तेमाल होती है. Meaning, an organization, activity, etc. that is used to judge the performance of another similar organization or activity. 16. Easterly. मशरकी, यूरोपी, शर्की, खावरी. मशरक की जानिब से आने वाला. Meaning, 1. In or towards the east, or blowing from the east. 2. Toward or near the east. 17. Expendable. सिर्फ शुद्धनी, बदल पजीर, रसद. साजो सामान रखने के काबिल नहीं है या मुफीद नहीं है. लोग उनके बगैर कुछ कर सकते हैं या सूरत हाल से निमट सकते हैं. Meaning, expendable refers to something or someone that can be sacrificed, used up, or disposed of without significant consequences or loss. 18. Rhetoric. फिन खिताबत इल्म बदी ओमानी बलगत बनावटी दुखूटी खिताबत गरजदार और भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल. फिन खिताबत खतीबाना तर्ज अदा. Meaning, 1. Speech or writing intended to be effective and influence people. 2. Clever language that sounds good but is not sincere or has no real meaning. 19. Amply. कसरत के साथ, वसी तौर पर, बुहतात के साथ, भरपूर. Meaning, ample means plentiful or abundant, indicating a sufficient or more than sufficient quantity or degree of something. The World Bank recently launched the Human Capital Review Report for Pakistan in Karachi and Islamabad. The headlines of the report were not a surprise. Pakistan's Human Capital Index is below even the South Asian average. Our comparison group is some of the countries in sub-Saharan Africa. Our population growth is still too high. Too many children die in infancy. Too many mothers die in maternity or are malnourished. Too many children grow up malnourished or stunted. 23 million children aged 5 to 16 years remain out of school. Most children get poor quality education. Skill programs do not exist for most children. And people do not have access to safe drinking water and decent waste disposal facilities. This is all we know and have known for quite some time. What the report does quite well is then to go into the details of what these headlines mean. It gives plenty of good examples and infographics to make the headlines come alive for readers. I think this is important for Pakistanis to see. Sometimes we get desensitized when we keep hearing 23M children are out of school and do not fully realize what it means for these children, their families, and the country. The report also does a good job of telling us what some of the consequences and implications of the current state of human capital are. Though we also know these, again, it is good to be given specifics. With the population growth that we have and no policies for curbing population growth rates, and in the absence of any priority accorded to it, we are looking at a country that will not be able to provide for the basic needs of most of its population. Pakistan is one of the countries that is very vulnerable to climate change. We are seeing some consequences of it, shifting of rain patterns, floods, shifting of temperature peaks, etc., and we are already a food importing country. If we have a much larger population to feed while our agriculture becomes even more vulnerable, we can imagine what is going to happen to food security for most people in the country. Unless state policies change radically, there will be serious consequences for the viability of this country. When we have more people, we need more of everything. For younger populations, we need schools. We have not been able to achieve any enrollment-related education targets ever. Even today we have not achieved 100% enrollment at the primary level. How are we going to educate a population that keeps growing? With malnourishment at 40 PC in our children, how much of our children's potential is being destroyed?
What kind of adults are they going to grow into? What will they be able to do for themselves, their families and the country? What sort of next generation are they going to produce, considering malnutrition in one generation impacts the next generation? The report brings out the human capital disaster that we are and what we are headed towards. While the World Bank has to use diplomatic language to deliver difficult messages, we do not have to be diplomatic. We should say it starkly and understand it clearly. We are a human capital disaster, and unless government and state policies change radically and permanently and right away, there will be serious consequences for the viability and sustainability of this country. It should also be kept in mind that the political and economic crises that we are seeing currently are also being caused by dynamics that are driven by the human capital crisis. If we think solving the political and economic crises should be the priority and we do not address the human capital crisis, these other crises are going to keep coming back. The World Bank staff, in their presentations and in subsequent discussions, were also diplomatic and appreciated the efforts governments have been making in the area of human capital. But given the state we are in, with our human capital indicators the worst in the region and among the worst in the world, and definitely not in line with the comparator countries if the comparator is decided on the basis of per capita income and other economic variables, how can one be anything but alarmed? And how can the blame not be put on the governments of the last many decades? The problem is not new either. So, it is not one government or political party that has led us here. Economic experts and commentators writing in the 1980s were also talking of the same issues. Pakistan was behind on its human development indicators. William Easterly's article "Growth Without Development" is worth reading in this regard. The issue is with our political economy. Those in power across the political, bureaucratic, establishment and economic spectrum, call them elites or whatever you like, have no interest in investing in the larger population. Their model of governance is one of exploitation and extraction. For them, most of the population of the country, and there is plenty of it, is quite expendable as long as they are able to extract something out of them. Why would they spend resources on their development? The result shows in our policies. Though we have heard the rhetoric about the importance of health and education by every government without fail, when have we spent more than 2% of our GDP on either? Never. It is not a surprise then that we are where we are, 23 million out-of-school children, about 45% of enrolled children going to private schools, and most of the children in school getting poor quality education. Sugarcoating aside, we are a human capital disaster. And we are going to be in even more trouble if we do not change direction radically and immediately. Policies of previous governments created this disaster and the current government is doing the same. The hope for major change, given our political economy issues amply on display at present, is slim. The writer is a senior research fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives, and an associate professor of economics at LUMS. Published in Dawn, May 12, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. आलमी बैंक ने हाल ही में कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के लिए ह्यूमन कैपिटल रिव्यू रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की शाह सुर्खियां हैरान कुन नहीं थी। पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जनूबी एशियाई औसत से भी नीचे है। हमारा मुवाजना ग्रुप सब सहारा अफ्रीका के कुछ ममालिक में से कुछ है। हमारी आबादी में इजाफा अब भी बहुत ज्यादा है। बहुत से बच्चे बचपन में ही मर जाते हैं। बहुत सी माएँ जचगी में मर जाती हैं और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाती हैं। बहुत से बच्चे ग़िज़ाई तग़ज़िया का शिकार हो जाते हैं। 5-16 साल की उम्र के 23 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं। ज़्यादातर बच्चों को नाक़िस मेयार की तालीम मिलती है। ज़्यादातर बच्चों के लिए हुनरमंदी के प्रोग्राम मौजूद नहीं हैं और लोगों को पीने के साफ़ पानी और फुज़ले को ठिकाने लगाने की मुनासिब सहूलियात तक रसाई हासिल नहीं है। ये सब हम जानते हैं और काफ़ी अरसे से जानते हैं। इस रिपोर्ट में जो काम किया गया है वो ये है कि उन सुर्खियों का क्या मतलब है, इसकी तफसील में जाना है।
ये क़ारीन के लिए सुर्खियों को जिंदा करने के लिए बहुत सारी अच्छी मिसालें और इन्फोग्राफिक्स देता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए देखना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात जब हम ये सुनते हैं कि 23 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो हम बेहिस हो जाते हैं और उन्हें इस बात का मुकम्मल एहसास नहीं होता कि उन बच्चों, उनके ख़ानदानों और मुल्क के लिए इसका क्या मतलब है। ये रिपोर्ट हमें ये बताने का भी अच्छा काम करती है कि इंसानी सरमाए की मौजूदा हालत के कुछ नताइज और मुज़मरात किया है। अगरचे हम इनको भी जानते हैं, एक बार फिर तफसीलात देना अच्छा है। हमारे पास आबादी में इजाफे और आबादी में इजाफे की शरह को रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है और उसको दी जाने वाली किसी तरजीह की अदम मौजूदगी में हम एक ऐसे मुल्क की तरफ देख रहे हैं जो अपनी ज़्यादातर आबादी की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल नहीं होगा। पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जो मौसमियाती तब्दीली और है के ख़तरे से दो चार है। हम इसके कुछ नताइज देख रहे हैं, बारिश के पैटर्न में तब्दीली, सैलाब, दर्जा हरारत की चोटियों की मुंतकिली वगैरह, और हम पहले ही खुराक दरामद करने वाला मुल्क है। अगर हमारे पास खाने के लिए बहुत बड़ी आबादी है जबकि हमारी ज़राअत और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि मुल्क में ज़्यादातर लोगों के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का क्या होने जा रहा है। जब तक रियासती पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीली नहीं आती, इस मुल्क की इफ़ादियत पर संगीन नताइज मुरत्तब होंगे। जब हमारे पास ज़्यादा लोग होते हैं तो हमें हर चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नौजवान आबादी के लिए हमें स्कूलों की ज़रूरत है। हम कभी भी इंदराज से मुताल्लिक़ तालीमी अहदाफ को हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। आज भी हम प्राइमरी सतह पर 100% इंदराज हासिल नहीं कर सके हैं। हम एक ऐसी आबादी को कैसे तालीम देंगे जो बढ़ती रहती है? हमारे बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत 40% है। हमारे बच्चों की सलाहियत का कितना हिस्सा तबाह हो रहा है? वो किस तरह के बालिग़ बनने जा रहे हैं? वो अपने लिए, अपने अहल खाना के लिए और मुल्क के लिए क्या कर पाएंगे? वो किस किस्म की अगली नस्ल पैदा करने जा रहे हैं, ये देखते हुए कि एक नस्ल में ग़िज़ाई क़िल्लत अगली नस्ल को मुतासिर करती है। ये रिपोर्ट इंसानी सरमाए की तबाही को सामने लाती है जो हम हैं और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगरचे आलमी बैंक को मुश्किल पैगामात पहुंचाने के लिए सिफारती ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हमें सिफारती होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बात वाज़े तौर पर कहनी चाहिए और इसे वाज़े तौर पर समझना चाहिए। हम एक इंसानी सरमाए की तबाही हैं और जब तक हुकूमत और रियासती पॉलिसियां बुनियादी तौर पर और मुस्तकिल तौर पर और फौरी तौर पर तब्दील नहीं होती हैं, इस मुल्क की पायदारी और पायदारी के लिए संगीन नताइज होंगे। ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वक्त हम जो सियासी और माशी बहरान देख रहे हैं वो भी इंसानी सरमाए के बहरान की वजह से पैदा हो रहे हैं। अगर हम समझते हैं कि सियासी और माशी बहरानों को हल करना अवलीन तरजीह होनी चाहिए और हमने इंसानी सरमाए के बहरान को हल नहीं किया तो ये दूसरे बहरान वापस आते रहेंगे। आलमी बैंक के अमले ने अपनी प्रेडिक्शंस और उसके बाद होने वाली बातचीत में भी सिफारती अंदाज में काम किया और इंसानी सरमाए के शोबे में हुकूमतों की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को सराहा। लेकिन हम जिस हालत में हैं, हमारे इंसानी सरमाए के इशारिये खित्ते में बदतरीन और दुनिया में बदतरीन हैं, और अगर मुवाजना का फैसला फ़ीकस आमनी और दीगर माशी मुतग़य्यरात की बुनियाद पर किया जाता है तो यकीनी तौर पर मुवाजना करने वाले ममालिक के मुताबिक नहीं है, कोई किस तरह परेशान हो सकता है और उसका इल्ज़ाम पिछली कई दहाइयों की हुकूमतों पर कैसे नहीं लगाया जा सकता। ये मसला भी नया नहीं है, लिहाजा ये कोई एक हुकूमत सियासी जमात नहीं है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। 1980 की दहाई में लिखने वाले माशी माहिरीन और मुबस्सरीन भी उन्हीं मसाइल पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान अपने इंसानी तरक्की के इशारियों में पीछे था। विलियम स्टर्ली का मज़मून तरक्की के बगैर तरक्की इस सिलसिले में पढ़ने के काबिल है। मसला हमारी सियासी मईशत का है। सियासी, ब्यूरोक्रेटिक, स्टेब्लिशमेंट और माशी मैदान ओहे में बरसरे इक़्तिदार लोगों को बड़ी आबादी में सरमायाकारी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी हुक्मरानी का मॉडल इस्तेहसाल और निकालने का है। उनके लिए मुल्क की ज़्यादातर आबादी और इसमें से बहुत कुछ है इस वक्त तक काफ़ी खर्च करने के काबिल है जब तक कि वो इनमें से कुछ निकालने के काबिल हों। वो अपनी तरक्की पर वसाइल क्यों खर्च करेंगे? इसका नतीजा हमारी पॉलिसियों से ज़ाहिर होता है।
अगरचे हमने हर हुकूमत की जानिब से सेहत और तालीम की अहमियत के बारे में बयानबाजी सुनी है, लेकिन हमने अपनी जीडीपी का 2% से ज्यादा खर्च कब किया? कभी नहीं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हम जहां हैं वहां 23 मिलियन स्कूल नहीं हैं। तकरीबन 45% दाखिल शुदा बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं और स्कूल ओहे में ज्यादातर बच्चे नाकिस मेयार की तालीम हासिल कर रहे हैं। शुगर कोटिंग को एक तरफ रखते हुए हम इंसानी सरमाए की तबाही हैं। और अगर हमने बुनियादी तौर पर और फौरी तौर पर समत तब्दील नहीं की तो हम और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। पिछली हुकूमतों की पॉलिसियों ने यह तबाही पैदा की और मौजूदा हुकूमत भी ऐसा ही कर रही है। इस वक्त हमारी सियासी मईशत के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बड़ी तब्दीली की उम्मीद बहुत कम है। मजमून निगार इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स में सीनियर रिसर्च फेलो और लम्स में इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अखज़ शुदा बतारीख 12 मई 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.